Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are very well and fine and enjoying the holy Ramadan days. Welcome back to the lecture number 8, week 4, System and Network Administration Linux based. And today our topic is file system hierarchy. And let's start from the recap of our previous lecture. In our last lecture, we were discussed about the Ubuntu terminal and Bash, how you can people, where I show you how you can use the Ubuntu terminal by using a command line interface. आप command line interface के साथ कैसे through commands अपने task को perform कर सकते हैं by using a terminal, Ubuntu per terminal. And also in our previous lecture, we discuss about the file system structure and the concept of inodes, how your data is stored in your file system and how data retrieved from the store devices by using link of inodes and index numbers of your inode structure. In today's class, we will discuss about the file system structure and hierarchy in details, where we discuss about the structure and commands of your subdirectories under the root directories. Dear students, the Linux file hierarchy structure are also called file system hierarchy standard that defines the directory structure and directory contents in Unix-like operating system. In our first lecture, I also told you about that. Linux file system is uh, written on the crash code of Unix operating system. It maintains by the Linux Foundation and started by Dennis Ritchie in 1993, that defines the main directories and their contents in most Linux-based systems. In file hierarchy standards, there is not any drive you can see in this file system as you are seeing the drive in Windows operating system. In Windows operating system, you people find a C drive, D drive, E drive by after creating a multiple partition of your storage device and so on. It depends on you how many partitions you uh, are interested to create by during the installation of Windows operating system. But in dear students, in Linux operating system, there is no any such devices as C, D, and E. In Linux operating system, you people find directories. In all directories are stored under the root directory. This is a forward slash that is called a root directory. In the file hierarchy standards, all files directories appear under this root directory, even they are stored on a different physical or virtual devices. It is possible to have multiple partitions and multiple file systems. All of these directories, you people can create a multiple partitions as you have practiced to create a partition in your Windows operating system. In this operating system, you also uh, can create a multiple partitions under the root directory, and each directory have multiple file systems. As you know, in Linux operating system, you people have extended file system, second extended file system, third extended file system, and many more. In this diagram, you people can see the hierarchical structure of the Linux file system. As I click on the my computer icon,
Under this icon I have multiple directories. Here you can see multiple folders, and each folders have a name. In Linux operating system, dear students, we call directories. Each file and folders called directories, and directories contain multiple files and folders. Here you can see the bin directory, boot directory, CD-ROM directory, dev directory, etc directory, home directory. All of these directories are subdirectories of the main directory that is called root directory. The role of Linux file system is that it stored the data and organize the data that can be easily located. The data can be easily retrieved at any later point in time. The integrity of data is preserved. Here I explain you how Linux operating system and how the file system of Linux operating system stored and organized your data. If you visit many times, I elaborate this example before in our previous lecture. When you people visit the library of your university, and you find there are multiple different sections, and names of that sections might be, you people find a uh, science section, mathematics section, physics department related to physics department, and chemistry department, and each sections you find the relevant books and data in that section. आप उस सेक्शन के अंदर, आप कंप्यूटर साइंस सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, अवेलेबल बुक्स जो हैं उस लाइब्रेरी के अंदर, वो आपको कंप्यूटर साइंस सेक्शन के अंदर जो है वो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आप उनको उनको वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है कि आपके डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपके डाटाबेस के रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उनको एक अलग रैक के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसका पर्पस क्या है? इसका बेटा पर्पस ये है कि जब आप कोई भी बुक जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, और अगर आप उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर आप उसको रखेंगे नहीं, तो आप उसको इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे, आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। अगर उन सब बुक्स को जस्ट ड्रॉप कर दिया जाए उस रूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स की बुक्स भी हों, आपके फिजिक्स के रिलेटेड बुक्स भी हों, और आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक्स जो हैं वो भी पढ़ी हुई हों, और किसी स्टूडेंट को भेजा जाए लाइब्रेरी से डाटा स्ट्रक्चर की बुक को फाइंड करने के लिए, या यूबंटो की बुक को फाइंड करने के लिए किसी स्टूडेंट को सेंड किया जाए, तो हाउ कैन यू सर्च दैट बुक रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए यू मस्ट create a section, different section, and you organize your data in that sections uh, to relate it that name of that section. The primary hierarchy in the file system is the root directory. In file hierarchy standard, root is the primary hierarchy of the entire file system. Every single file and directory start from the root directory. आपकी हर फाइल जो है और आपकी हर डायरेक्टरी जो है वो उस रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होगी। All paths start from the root directory. There is only one root directory in each file system. आपके हर फाइल सिस्टम के अंदर जो आपकी डायरेक्टरी होगी, जिसको हम प्राइमरी डायरेक्टरी कहेंगे, वो आपका रूट डायरेक्टरी कहलाएगी। रूट is a root user home directory which is not same as a your primary hierarchy. आपकी जो ये वाली रूट डायरेक्टरी है, ये आपकी रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी कहलाएगी, और जबकि आपकी ये वाली जो रूट है ये आपकी उसकी प्राइमरी डायरेक्टरी कहलाएगी। And dear students, here I also mentioned
only root users has rights to write under the root directory. आपका जो रूट यूजर होगा उसके पास ये राइट्स हैं, वो इसके अंदर जो है वो चीज़ों को ऐड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी कहते हैं समटाइम्स। अपने रूट डायरेक्टरी को आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी कह सकते हैं। Here you can see in this diagram, this is your root directory, प्राइमरी डायरेक्टरी। उस प्राइमरी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास ये जो है मल्टीपल सब डायरेक्टरीज हैं, जिसमें आपकी बूट डायरेक्टरी है, आपकी बिन डायरेक्टरी है, डेव डायरेक्टरी है, etc डायरेक्टरी है, एंड सो ऑन। Here you can notice that the topmost directory in the structure is the root directory, that is called the root directory. Beneath the root directory there are series of subdirectories. आपके root directory के अंदर आपके root directory के नीचे जितने भी हैं वो सब की सब subdirectories कहलाएंगी. Specification for how these directories are to be named contained in the file system hierarchy standard. आप इनको कैसे नेम असाइन करेंगे, उनको कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो स्टैंडर्ड है वो फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड के साथ डिफाइंड है. Boot directory is a subdirectory of your root directory. It stored the bootloader files configuration, all the files that is related to your boot files, configuration files are stored in the boot directory. If you lost the boot, अगर आपकी boot directory जो है वो lost हो जाती है, आपकी boot directory जो है वो crash हो जाती है, you cannot boot your operating system. आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं कर सकते, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक आपकी बूट डायरेक्टरी जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी. Under the boot directory there are some more subdirectories of boot directories, such as you can see here uh, some more subdirectories: VM Linux, config, grub. All of these directories, you can say the subdirectories of boot directory. Uh, all these subdirectories has to perform different functionalities during configuration of boot files, such as VM linux 2.612 store the information related to the kernel of operating system. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस सब डायरेक्टरीज के पास स्टोर होगी. इट इज द एब्रिविएशन ऑफ लिनक्स मेमोरी virtual memory Linux zip that compresses the Linux kernel executable files, while the functions that perform the config subdirectory has responsibility to install the kernel configuration files. This is a most useful when compiling kernel on other system. While GRUB, that is also called Grand Unified Bootloader, has responsibility to configuration files including boot up images and sounds. While the another subdirectory of a root directory, that is bin directory, it contains the several useful commands that are used to both the system administrator as a non-privileged user. There are two users.
one user has maximum privileges and another user has limited privileges, such as who which user has maximum privileges. That is, you can say your root user or your administrator user. आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा उसके पास मैक्सिमम प्रिविलेजेस होंगे वो अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए. Administrator user have rights to add any other application in your operating system, and administrator user has rights to remove any application, any software from the operating system. While the guest operating system in your uh, Linux operating system or in your Windows operating system have less privileges, and that privilege is assigned by the administrator user. आपका administrator user जो है वो अपने guest user को कौन से ड्राइव को एक्सेस करने के राइट्स जो है वो उसको एक्सेस देते हैं, और कितने राइट्स जो हैं वो आपके गेस्ट यूजर को असाइन किए जाते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. As you have experience in your university's labs, आप यूनिवर्सिटीज के लैब्स को जब यूज कर रहे होते हैं, लैब्स के कंप्यूटर्स को जब यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आपके राइट्स को डिफाइन किया हुआ है कि आप उस सिस्टम, जिस सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते by installing any other application or any other software, or removing or deleting or uninstall any application or software from that computer. तो वहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो राइट्स डिफाइन कर देता है कि आपके पास कितने राइट्स हैं, आप कौन सी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं और आप उस ड्राइव को कितना एक्सेस कर सकते हैं. आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव से के फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आप एक यूजर as a guest user, or there are multiple users in your system. अगर आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो यूजर ए के पास राइट्स नहीं होंगे कि वो यूजर बी की फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सके, उसको व्यू कर सके, और यूजर बी के पास भी राइट्स नहीं होंगे कि वो आपके यूजर ए के फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सके और उसको एक्सेस कर सके. It contains the shell-like bash chs commands in your bin operating system, and commonly used commands like cp means copy, mv move, rm how you can remove your files from the current directory, how you can move files or folders from your current directory, and how you can copy a data from one file to another file in your current directory, and how many files or folders you people have in your current directory, and if you want to view that files and folders in your current directory, then you have to write a command ls. As we experienced in our previous lecture, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन बेसिक कमांड्स को राइट करके दिखाया कि आप अगर ls की कमांड लिखते हैं तो आपके पास करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स आपने क्रिएट कर रखे होंगे आपको
व्यू हो जाएंगे। There are no real subdirectories in bin directory. As I showed you, under the root directory, there are some more subdirectories. In the bin directory, there are some subdirectories, but here you can not say these are the real subdirectories of bin directory. There are multiple commands uh, performed under the bin directory. Here you can see the multiple your bin directory and the detail of these commands. You can see the cat by using this command. In our upcoming lecture we go through with these commands and we perform that by writing the commands in your terminal. हम टर्मिनल के अंदर इन कमांड्स को लिख के अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेंगे कि आपकी कैट कमांड जो है वो किस तरह concatenates the files to standard output आपकी थ्रू कैट कमांड CAT। ये कैट बिल्ली वाला नहीं है जो आपके घरों में और हमारे घरों में पाई जाती है। ये कार्ड जो है कैट जो है ये यूनिक्स और लिनक्स की कमांड है। इस कमांड को यूज करते हुए हम दो फाइल्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उनकी आउटपुट को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। chmod एक और कमांड है। इनको भी इन सब कमांड्स को डियर स्टूडेंट्स हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर करके देखेंगे कि ये कमांड्स जो हैं वो कैसे लिखी जाती हैं और इन कमांड्स के थ्रू जो यहाँ पे इनकी डिटेल्स जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि दो फाइल्स को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। हम चेंज कर सकते हैं फाइल्स की परमिशंस को, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको डिफाइन किया कि आपके यूजर्स के पास राइट्स जो हैं वो कौन से राइट्स आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्पेसिफिक यूजर को राइट्स असाइन करता है, उसके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं। तो हम उन परमिशंस को चेंज कर सकते हैं कि फाइल के ऊपर आपकी परमिशन है, द यूजर ओनली कैन व्यू दैट फाइल, the user only can view that file, but he or she cannot be capable to edit that file, he or she cannot be capable to remove that file। उस यूजर के पास ये अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से असाइन नहीं की गई कि वो उसको रिमूव कर सके उस फाइल को, और ही और शी कैन डिलीट दैट फाइल, वो उसको डिलीट कर सके। तो ये जो परमिशंस हैं, ये जो राइट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो उस फाइल के ऊपर असाइन कर दिए गए हैं, उन राइट्स को आप chmod की कमांड को यूज करते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। सीपी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि यूटिलिटी टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपकी डेट कमांड जो है वो इसके साथ आपके सिस्टम की डेट जो और टाइम जो है वो शो हो जाएगा। df कमांड यूटिलिटी टू रिपोर्ट द फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस, आपकी डिस्क स्पेस जो है वो कितनी यूज हुई हुई है वो df कमांड के थ्रू जो है वो शो की जा सकती है। और echo यूटिलिटी टू डिस्प्ले द लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, आप के पास जो टेक्स्ट आप अपनी फाइल के अंदर लिख चुके हैं उसको डिस्प्ले किया जा सकता है बाय यूजिंग echo कमांड एंड FALSC false कमांड थ्रू false कमांड यूटिलिटी टू डू नथिंग अनसक्सेसफुली इस जो है वो शो किया जा सकता है। अंडर द bin directory there are many commands you people have in this subdirectories and all these commands stored under the bin directory। आपकी जितनी भी ये टर्मिनल बेस्ड कमांड्स हैं वो सब की सब कमांड्स जो हैं वो आपकी बिन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। होस्ट नेम को आप देखना चाहते हैं तो बाय यूजिंग कमांड यू हैव टू राइट अ कमांड इन योर टर्मिनल होस्ट नेम दैट शो यू और सेट द सिस्टम होस्ट नेम। आप इस कमांड के जरिए आप अपना होस्ट नेम देख सकते हैं। by using kill command send a signals to the process। आप एक सिग्नल जो है वो प्रोसेस की तरफ सेंड कर सकते हैं उस सिग्नल को किल करने के लिए। द नेक्स्ट कमांड यूटिलिटी टू मेक द लिंक्स बिटवीन द फाइल्स, आपकी फाइल्स के दरमियान जो है वो आई नोड्स जो हमने डिस्कस किए उन आई नोड्स के
अंदर जो है आपकी मल्टीपल फाइल्स जो है उनको लिंक किया हुआ है आपके डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे लिंक किया जा सकता है? बाय यूजिंग दिस कमांड। लॉगिन कमांड, आप सेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। ls कमांड जो है वो आपकी डायरेक्टरी का कंटेंट जितने भी हैं वो शो कर देगी। mk डायरेक्टरी, mk डायरेक्टरी मींस मेक डायरेक्टरी। आप कोई नई डायरेक्टरी जो है वो बनाना चाहते हैं, एक नया फोल्डर जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप बाय यूजिंग mkdir आप इस कमांड के थ्रू आप अपने एक नई डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अंडर द करंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में आप एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कमांड लिखेंगे mkdir और उस इस कमांड के आगे उस डायरेक्टरी जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो फाइल और फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, तो आपकी नई डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह सो ऑन मोर आपके पास है। यूटिलिटी टू पेज थ्रू टेक्स्ट, आप पेज को थ्रू कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट पेज को थ्रू कर सकते हैं। यूटिलिटी टू माउंट अ फाइल सिस्टम, आपका फाइल सिस्टम कहाँ पे स्टोर्ड है, आपका फाइल सिस्टम कहाँ पे माउंट किया जा रहा है, आप इस कमांड के जरिए आप माउंट कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम को। और mv कमांड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि mv कमांड जो है वो आपकी फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए भी यूज हो रही है, और सेम आपकी कमांड जो है वो आपकी फाइल का नेम जो है उसको रीनेम करने के लिए भी यूज हो रही है। इस तरह pwd मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो आप pwd डायरेक्टरी के साथ उसको व्यू कर सकते हैं। रिमूव अ फाइल और डायरेक्टरीज, आप किसी फाइल को रिमूव करना चाहते हैं, किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप rm की कमांड यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि rm की फाइल, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं होगा, जस्ट फाइल्स को ये रिमूव करेगी। और जब आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप rmdir लिखेंगे। देयर इज अ टाइप मिस्टेक, ये डायरेक्टरीज यहाँ से हम हटा देंगे। आपकी जस्ट rm आप फाइल को रिमूव करना चाहेंगे तो आप rm और नेम ऑफ दैट फाइल, आप उस फाइल का नाम लिखेंगे। और अगर आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी में से, तो आप rmdir, ये dir जो है वो आपकी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर नेक्स्ट आप उस डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे, तो आपकी ये फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद वो डायरेक्टरी जो है आपकी करंट डायरेक्टरी से में से रिमूव हो जाएगी। SSS बॉर्न कमांड सेल आपको शो करेगा, और SU यूटिलिटी टू चेंज द यूजर आईडी। जब भी कोई आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो आप सू SU कमांड के साथ जो है वो अपनी कमांड जो है वो लिखेंगे। आपकी जो भी कमांड होगी, अगर उसको आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस कमांड से पहले आप SU की कमांड लिखेंगे। SYNC सिंक कमांड जो है फ्लश द फाइल सिस्टम बफर्स, आपके फाइल सिस्टम के बफर को फ्लश करने के लिए यूज होगी। TRUE ट्रू कमांड जो है यूटिलिटी टू डू नथिंग सक्सेसफुली, आपकी कमांड यूज हो रही है। और अभी जो आपने किसी फाइल सिस्टम को, किसी डायरेक्टरी को माउंट किया था, उसको अनमाउंट करना चाहते हैं, तो आप यू माउंट लिखेंगे कमांड, यूटिलिटी टू अनमाउंट द फाइल सिस्टम। और आप अगर किसी फाइल का नेम जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप जो कमांड लिखेंगे वो यू नेम होगी, प्रिंट द फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन, आपकी उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट कर देगी। इस तरह my dear students, one another directory we have, that is a dev directory. Under the dev directory usually is the location of device files. आपकी जितनी भी डिवाइस के रिलेटेड आपका डाटा होगा, जितनी भी डिवाइस के रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो इस dev डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। If you remember, in our previous lecture I told you कि आपकी ये जो
जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो आपका डाटा जो है इन डायरेक्टरीज के अंदर जो स्टोर करेंगे, आप जो डाटा इस डायरेक्टरीज के अंदर राइट करेंगे वो रिलेटेड होगा इन डायरेक्टरीज के अंदर के साथ, तो वो स्टोर होगा। अगर वो इन डायरेक्टरीज के साथ रिलेटेड नहीं होगा तो वो इन डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल दी थी कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप सी ड्राइव अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपनी डी ड्राइव जो आपने पार्टीशन के साथ क्रिएट की हुई है, आपकी ई ड्राइव जो आपने क्रिएट की हुई है, उन ड्राइव्स के अंदर आप डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट एक्सटेंशन के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो सी ड्राइव के अंदर भी आप अपने स्टोर करवा सकते हैं, और आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो अपनी जो आपने आफ्टर क्रिएशन ऑफ पार्टीशन, आपने पार्टीशन जो क्रिएट की हैं तो डी ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो आप अपनी स्टोर कर सकते हैं। आप उसका पाथ चेंज करते हुए किसी भी ड्राइव के अंदर आप उस इंफॉर्मेशन को, उन फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये अलाउ नहीं करता। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितनी भी कमांड्स लाइन की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी वो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी कमांड्स जो हैं वो बिन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करेगा। आपकी जितनी भी बूट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अंडर द बूट डायरेक्टरी, आपकी इंफॉर्मेशन जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो अंडर द बूट डायरेक्टरी जो है वो स्टोर होंगी। इसी तरह आपकी जितनी भी डिवाइसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, डिवाइसेस मींस आप अगर अपने सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर लगा देते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टैब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। आप अपनी डिवाइस के साथ कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर देते हैं, वो आपकी यूएसबी हो सकती है, वो आपका मल्टीमीडिया हो सकता है, वो आपका प्रिंटर हो सकता है, वो जितनी भी है वो आपका माउस हो सकता है। ये जितनी भी डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो आपकी टेप डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। A device and files both can be read from and written to, so config a device is the same with the editor file. For example, sending a data to dev ttvyso, that means you are sending a data to a communication device such as modem। ठीक है, आप दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करें, और उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन जो है, उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन अंडर द डेव डायरेक्टरी है आपकी। यहाँ पे जब भी इस कमांड इन डिवाइसेस के दरमियान आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप जब कमांड राइट अप करेंगे अपने टर्मिनल के अंदर तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे डेव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देंगे, फिर उसके नेक्स्ट आप उस डिवाइस का नाम लिखेंगे जिस डिवाइस के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ब्लॉक डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट स्टोर और होल्ड द डाटा। आपकी जो ब्लॉक डिवाइसेस हैं वो आपके डिवाइस के रिलेटेड जो है वो डाटा को स्टोर करेंगे, वो अंडर द ब्लॉक डिवाइसेस स्टोर होगा। और connected devices can be thought of as devices that transmit or transfer our data। यहाँ पे आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा डिवाइसेस के दरमियान करेक्टर बाई करेक्टर, जबकि ब्लॉक डिवाइसेस जो हैं वहाँ पे आपका डाटा जो है वो चंक्स की सूरत में आपके ब्लॉक्स की डाटा में डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा। यहाँ पे जिस तरह हमने पिन डायरेक्टरी के अंदर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल कमांड्स देखी हैं, इस तरह डेव डायरेक्टरीज के अंदर भी मल्टीपल कमांड्स हैं जिनको आप राइट कर सकते हैं। ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो आपकी डिवाइसेस के रिलेटेड है। ठीक है, डिवाइस कनेक्टेड टू मॉडर्न माउस, आप कोई भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी कमांड को जो है वो लिखेंगे, राइट अप करेंगे अपने टर्मिनल। आप PS2 माउस हुआ करते थे, आजकल के आपके माउस जो हैं वो यूएसबी टाइप के माउस हैं। इससे प्रीवियस जो है माउस हैं वो उनके आगे जो पिन हुआ करती थी वो बारीक बारीक पिन्स लगी होती थी उसमें, उन माउस को PS2 माउस कहते थे। ठीक है, उसकी कमांड्स आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह कमांड लिखेंगे। फर्स्ट पैरेलल पोर्ट को यूज करना चाहते हैं तो उसकी कमांड ये है। आप साउंड कार्ड को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसकी कमांड जो है वो ये वाली यूज होगी। आप यूएसबी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं
तो आप टैब स्लैश यूएसबी लिखेंगे। आप फर्स्ट SCI/SI डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप टैब के अंदर SDA लिखेंगे। आप फर्स्ट SCI/SI CD रोम डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड यूज करेंगे एंड सो ऑन। दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मज़ीद सब डायरेक्टरीज जो है उनको देखेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि उनके वो कौन से टास्क हैं जो अदर सब डायरेक्टरीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और उन सब डायरेक्टरीज के साथ कौन सी कमांड्स जो हैं वो रिलेट करेंगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।